ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। So what I can firmly and confidently say that whether it is the government or indeed our business, at the end of the day, national interests will be the guiding factor for us in our choices. ये बयान जो आपने अभी सुना, यह है भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का, जिन्होंने अमेरिका से ट्रेड डील के बीच भारत की तरफ से रूसी तेल खरीद को लेकर दुनिया को दो टूक जवाब दे दिया। सीधे और साफ शब्दों में भारत ने कह दिया है कि एनर्जी सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता है और तेल खरीद का फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में होगा। हाल के दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और अमेरिका से ज़्यादा ऊर्जा आयात करेगा, लेकिन भारत ने इन दावों पर ना कोई मुहर लगाई, बल्कि उल्टा भारत सरकार ने अपना रुख पूरी मजबूती से साफ कर दिया। इसी मामले पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत एक विकासशील देश है और अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 80 से 85% आयात करता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि देश को सस्ती, भरोसेमंद और स्थिर ऊर्जा सप्लाई मिले ताकि आम लोगों पर महंगाई का बोझ न पड़े। विदेश सचिव ने साफ कहा कि जब देश इतना ज़्यादा ऊर्जा आयात करता है तो तेल की कीमतों का सीधा असर हर भारतीय की जेब पर पड़ता है। इसलिए सरकार का पहला और आखिरी लक्ष्य होता है कि भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बीते कुछ वर्षों में वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिली है। कभी युद्ध हुआ है, कभी सप्लाई चेन में संकट आई है, तो कभी कीमतों में तेज़ उछाल। ऐसे में भारत ने किसी एक देश पर निर्भर न रहने के बजाय तेल आयात को डाइवर्सिफाई किया। आप खुद देखिए इस मामले पर विदेश सचिव ने क्या कुछ कहा। You are aware that India is a net importer in the oil and gas sector. We are a developing economy. We have to be conscious about our resource availability. Naturally, when you are dependent to the extent of 80-85% on an imported resource, you have to have concerns about the possibility of inflation driven by energy costs. So it's not surprising, therefore, that our foremost priority is to safeguard the interests of Indian consumers insofar as energy is concerned, to ensure that they receive adequate energy at the right price and through reliable and secure supplies. And our import policy insofar as energy is concerned is therefore driven entirely by these objectives. Now, you would also have observed that in recent years, the global economy has faced significant uncertainties, which have had a major impact on the stability of global energy markets. India, certainly, I would imagine a lot of countries around the world, if not every country, have a shared and common interest in ensuring stable energy prices and secure supplies. And in fact, I would underline that India is not just one of the largest consumers of energy, but it also plays an important role as a stabilizing factor in global energy markets. And that's one reason why we import energy from multiple sources. So, as I mentioned earlier, the key drivers of our energy policy are adequate availability, fair pricing, and reliability of supply.
So if you look at the data, and I'm sure you're looking at the data on a constant basis, you will see that we import crude oil from dozens of countries. We are neither dependent on any single source for this, nor do we intend to be. And it is natural for the mix of sources to vary from time to time, depending on objective market conditions. Our approach is to maintain multiple sources of supply and diversify them as appropriate to ensure stability. Therefore, I would say that the more diversified we are in this area, the more secure we are. Insofar as actual sourcing of energy is concerned, again, all of you follow this closely, so you know that the actual sourcing is done by oil companies. Oil companies in the public sector, oil companies in the private sector. And they make decisions based on market conditions. They assess availability at any given point in time. They assess risks. They assess costs in this process. And obviously, all of these companies also have their own internal accountability related processes to look at, and certain fiduciary responsibilities in the market. So at any given time, there is a rather complex matrix of issues that these companies have to take into account, which, not to disregard it, also includes very, very important financial and logistical aspects. So I expect that what you will continue to see in this sector, in this area, is business choices being made based on these considerations that I have outlined. So what I can firmly and confidently say that whether it is the government or indeed our business, at the end of the day, national interests will be the guiding factor for us in our choices. भारत आज दर्जनों देश से कच्चा तेल खरीदता है। न भारत किसी देश का मोहताज है, न भविष्य में बनने वाला है। आपने देखा कि विदेश सचिव ने साफ कहा कि तेल की खरीद बाजार की स्थिति, कीमत, उपलब्धता और जोखिम को देखकर तय की जाती है। यही वजह है कि भारत ज़रूरत के हिसाब से रूस, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अन्य देशों से तेल खरीदता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि तेल खरीदने का फैसला सरकारी या निजी कंपनियां लेती हैं, जिनकी अपनी जवाबदेही व्यवस्था होती है। लेकिन चाहे फैसला सरकार ले या कंपनियां, राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर रहता है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल खरीदने पर रोक लगाने की बात कही है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने कई बार दोहराया कि 1.4 अरब लोगों की ज़रूरतें ही भारत की नीति तय करती हैं। साफ संदेश है, भारत जो कहता है वही करता है। एनर्जी सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं। ज़रूरत के हिसाब से तेल खरीदा जाएगा जब जिससे भारत की इच्छा होगी, और फैसला सिर्फ और सिर्फ भारत के हित में ही होगा। यही है नया भारत। आप भारत की इस नई तेल खरीद की सोच को या नीति को कैसे देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।